Hello everyone, welcome back to our channel, The Kraken. So I am Sumant. We'll discuss some important terms related to the BFM paper, module B, obviously, right? So here are the important terms you need to know before solving the next upcoming case study, right? So these are the terms. If you are seeing all these terms, you can easily get to guess. You can say that all these terms will be used in the Basel. आपने बासेल वाला सेशन देखे होंगे। सो वहाँ पर थोड़ा सा थियोरी हमने डिस्क्राइब किया था, उसका अगर डीपली जाएंगे सो बासेल 3 में रिस्क इंक्लूड रहता है, उसमें से आपका है दीज आर द टर्म्स रिलेटेड टू दैट बासेल 3। ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स यू नीड टू नो एटलीस्ट द ओवरऑल आइडिया ऑफ फर्स्ट वन। ठीक है, सो फर्स्ट टाइम में हमारा एक आता है रिस्क वेटेड एसेट। सो रिस्क वेटेड एसेट क्या है? It's nothing but bank's assets. It's like a bank assets that is off balance sheet exposures. ठीक है, सो ये क्या है? ये एक हमारा जो है बैंक एसेट है और दिस इज लाइक ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर, जो कि आपका बैलेंस शीट में इंक्लूड नहीं होता है। सो दैट इज ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर ऑफ ए बैंक, गॉट इट? सो उसके साथ एक्सपोजर्स वेटेड अकॉर्डिंग टू द रिस्क। सो ये जो है रिस्क वेटेड एसेट बैंक्स एसेट है, ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर है और वेटेड, और इसका जो वेटिंग है सो इट्स वेटेड एज पर द रिस्क। सो जैसे कि हमारा बैंक में बहुत सारा देयर आर मेनी रिस्क आर इन्वॉल्व, ऑपरेशनल रिस्क, क्रेडिट रिस्क and market risk, all the risk. So as per the risk factor we need to have the exposure of balance sheet exposures. We need to have all these exposures. And why this weighted asset is very important? Before that we need to know this sort of asset calculation, this sort of asset, these are the assets which will be helpful, that's why we used in what? Determine the capital requirement or capital adequacy ratio for a financial institution. So ये जो RWA is used to calculate the capital adequacy ratio. ठीक है, so capital, this is CAIIB means capital adequacy ratio. That means capital adequacy ratio means adequacy. That means what's the adequate amount of capital to be required to oppose the bank's solvency, right? That means we can say this is capital requirement. That means what's the minimum amount of capital the bank require to be safe in any types of worst situation. अगर कोई भी worst situation होता है जिस टाइम जहां पर आपका बैंक का सॉल्वेंसी के ऊपर चांसेस आ सकता है, ठीक है, सो उस केस में ये जो है कैपिटल दिस विल बी ए समथिंग सेफ. we can say this capital will be used that time to save the bank. ठीक है, so here important is the minimum regulatory requirement must be held by the to maintain the solvency. So ये जो capital requirement है ये वाला क्यों यूज होता है? that is to maintain the solvency. ठीक है, जो solvency है उसको maintain करने के लिए हमारा जो है all these things we need to do in the bank, got it? okay, so main important thing is here, अगर हमारा RWA, if this RWA is higher, what does it mean? That means when the RWA risk weighted asset, when the exposure amount will be higher, this will be in the higher side when the risk is, or when the asset, whatever you are using, when the asset risk is high. जब ये आपका हाई होगा that time we will have something more exposure. ठीक है, got it? and जब रिस्क ज्यादा होगा we need some more capital. simple concept, all the things are related. it's like रिस्क के साथ हमारा लिंक है एक्सपोजर. एक्सपोजर मीन्स आपका वही है RW है, और RW का जो मेन है हमारा मोर कैपिटल आपका रिक्वायर्ड है. सो मेन फैक्टर है टू अवॉइड दिस रिस्क एंड टू मेंटेन द बैंक seamlessly. ठीक है, so these are the important things is this.
एंड नेक्स्ट हमारा और एक पॉइंट है कि हाउ यू विल कैलकुलेट दिस RWA. So to calculate this RWA, we need to multiply the exposure amount. So जितना भी हमारा रिस्क वेट होगा, एक सेकेंड, सो रिस्क इसको हम इक्वल कर सकते हैं. सो रिस्क वेट होगा, उसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, विल मल्टीप्लाई विद द एक्सपोजर अमाउंट. ठीक है. सो ये जो रिस्क वेट होगा फॉर ए पर्टिकुलर एसेट, रिस्क वेट फॉर ए पर्टिकुलर एसेट. ठीक है, फॉर एन एसेट दैट विल बी पर्टिकुलर एसेट, पर्टिकुलर लोन, जो भी लोन होगा, जैसे का होम लोन है, पर्सनल लोन है. सो डिफरेंट डिफरेंट लोन के लिए, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. हमारा एक लोन है, एडवांस है, हाउस लोन, दैट इज होम लोन. और एक है हमारा पर्सनल लोन. ठीक है, ये टू फैक्टर्स है. पर देखिए यहाँ पर हमारा रिस्क जो एक्सपोजर है कैसे डिफरेंट होता है. होम लोन में हम क्या रखते हैं, हमारा मॉर्गेज रहता है. सो यहाँ पर बैंक का अगर होम लोन विल बी डिफॉल्टेड, अगर एनपीए भी होता है, वहां पर बैंक का अपना जो है लॉस होने के चांसेस कम है, क्योंकि हमारे पास एक सिक्योरिटी है, एक मूवेबल सिक्योरिटी, सॉरी इमूवेबल सिक्योरिटी है. जैसे होम है, जो भी लैंड है, दैट शुड बी मॉर्गेज विद द बैंक. सो यहाँ पर जो है बैंक को इतना डरने का जरूरत नहीं. पर इन केस ऑफ पर्सनल लोन हम क्या करते हैं, बिजनेस पर्सन को देते हैं, सैलरीड पर्सन को हम नॉर्मली प्रेफर करते हैं, क्योंकि उसका एक स्टेबल इनकम रहता है. गॉट इट. So in case this personal loan is given without any security. So in this personal loan, if the percentage of personal loan, ये तो है आपका asset ना, अगर ये if one bank has something like more personal loan, then he needs to have something more RWA. उसका जो exposure है need to be high, because अगर personal loan NPA होता है, that something like more trouble for that bank to recover that particular amount for this personal loan. So with respect to the type of loan, will decide the risk weight for that particular asset. For that particular asset, that is risk weight for personal loan will be greater with respect to the risk weight for the home loan. So with respect to this, we need to calculate, and accordingly we will multiply the exposure amount. Got it. So then only we will calculate the रिस्क वेट एसेट. ठीक है. सो ये जो होता है, सो जितना भी है, ऑल दोस थिंग्स फॉर ऑल द टाइप्स ऑफ, क्या होता है ना, बैंक अगर टोटल जो क्रेडिट रिस्क वेट एसेट अगर करेगा CRWC, जो CRWA क्रेडिट रिस्क वेट एसेट, सो टोटल क्या करता है, जितना होगा सबको, जितने लोन का होगा सबको कैलकुलेट किया जाएगा इंडिविजुअली. पहले हम क्या करेंगे, इंडिविजुअली कैलकुलेट करेंगे और सबको ऐड ऑन कर लेंगे. देन ओनली विल गेट क्रेडिट रिस्क, टोटल क्रेडिट रिस्क. टोटल क्रेडिट रिस्क कैलकुलेट करने के लिए वी नीड टू कैलकुलेट रिस्क वेट ऑफ इंडिविजुअल एसेट, देन विल ऐड ऑल द एसेट्स टुगेदर, देन ओनली विल गेट द टोटल क्रेडिट रिस्क वेट एसेट. ठीक है. सो ये एक इम्पोर्टेंट थिंग्स है जो कि हमारा कैलकुलेट होता है. टू यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है, क्यों यूज होता है. सो दिस रेशियोज, दिस और एक इम्पोर्टेंट है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो. देखिए ये इसके साथ रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इज यूज टू कैलकुलेट द कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर दैट बैंक. ठीक है. सो व्हाट्स द यूज ऑफ दिस कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो ensures the efficiency and stability of a financial system, ensure the stability and efficiency of a financial institution. ठीक है. by lowering the risk of banks becoming insolvent. so यहाँ पर क्या होता है, जो insolvent होने का जो रिस्क है उसको लो कर देता है. if capital adequacy is high, then the insolvent risk will be very low. ठीक है. so these are the things you need to know. ठीक है. and if one bank is having higher capital adequacy ratio, that means we can say if a bank is having but high capital adequacy ratio, we can say this is high capital adequacy ratio, then that particular bank is more safe. ठीक है. that means he is having more than the capital requirement to face any unfortunate situation in upcoming days.
Got it? So next जो हमारा important है, these are the things that is tier 1 and tier 2 capitals. So let me tell you the examples of the tier 1 and tier 2 capitals. Tier 1 are the core capitals, as we all know. And what are the included in tier 1 capital? Here you can see tier 1 capital is the primary funding source of the bank. ये क्या है हमारा? This is the primary funding source of the bank. So इसको we can say this is core capital. ठीक है? So it consists shareholders equity plus retained अर्निंग. बट इट सो आपका टायर 1 में ये होता है हमारा प्राइमरी सोर्स ऑफ द बैंक, और ये इट इंक्लूड्स द शेयर होल्डर्स इक्विटी एंड रिटर्न अर्निंग. एंड टायर टू में हमारा क्या क्या इंक्लूडेड होता है? दिस इज टायर 2 में हमारा इंक्लूडेड होता है, दिस इज द रिवैल्यूएशन रिजर्व्स, ठीक है, जो भी हमारा रिवैल्यूएटेड रिजर्व्स रहेगा. उसके बाद जितना है हमारा हाइब्रिड कैपिटल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है. सो नेक्स्ट वन विल बी सबऑर्डिनेट टर्म डेट्स, subordinated term debts, this is tier 2. So next one will be general loan loss reserves, or next the tier 2 will be, sorry, tier 2 includes the undisclosed reserves. So these are the things included in tier 1 and tier 2 deposits. ठीक है. So these are things we can see. So one more important another term is, you can see, just remember these are the things: shareholders equity, retained earnings, what are included in tier 1 and tier 2. So one more important term we normally use, that is the leverage ratio. So what do you mean by this leverage ratio? So this leverage ratio is, ये जो है leverage ratio क्या किस लिए यूज होता है? This is used to, जो नॉर्मली होता है डेप्ट ऑफ द बैंक, so जिसका है this is debt to capital ratio. सो बैंक के पास कितना डेप्ट है, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू इट्स कैपिटल, जितना भी उसका कैपिटल है, और बैंक का कितना डेप्ट है, ये जो रेशियो है दिस इज नोन एज, दैट इज लिवरेज रेशियो. ठीक है. स्पेशली फॉर द टायर 1 कैपिटल क्या है, नॉर्मली हम विथ रिस्पेक्ट टू टायर 1 कैपिटल जो है, विथ रिस्पेक्ट टू दैट वी नीड टू कैलकुलेट कि बैंक का कितना डेप्ट है, हाउ मच द डेप्ट दैट पर्टिकुलर बैंक इज हैविंग, एंड विथ रिस्पेक्ट टू दैट we need to calculate, and this capital will include the tier 1 specially, and including the common stock, return earning, and selected other assets as well. ठीक है. So this is the leverage ratio. So these are some important points with respect to the exam, right? We need to, and this important one, these are the terms we need to relate with respect to the exam, so that you can easily solve the next upcoming case studies, right? So one more important thing I would like to add here in tier 1 and tier 2, एक second. So one more important thing is, you know,
with respect to this tier 1 is very useful, very important, and for the bank's perspective this also tier 1 normally used to measure a bank's financial health. so ये बैंक को डूबने से बचा सकता है, ठीक है, जो डिस्ट्रेस इन जो इंसॉल्वेंट होने से बचा सकता है, टू बिकम इंसॉल्वेंट. इट ऑल्सो अपोज द टू सेफ गार्ड फ्रॉम द इंसॉल्वेंट. सो ये फाइनेंशियल हेल्थ को डिफाइन करता है आपका टायर 1. जितना आपका टायर 1 अच्छा होगा उतना ही आपका बैंक का फाइनेंशियल हेल्थ अच्छा ही है. सो बैंक यूज नॉर्मली बैंक्स क्या करता है, यूज दिस टायर 1 कैपिटल टू ऑब्जर्व लॉसेस, जितना भी लॉसेस है विदाउट चेंजिंग द ऑपरेशन बैंक बिजनेस. सो इफ देयर इज सम चांसेस ऑफ लॉसेस while doing the all the financial transactions, right? So in that case to observe all the losses, normally bank use this tier 1 capital, ठीक है. So without hedging, so no need to affect all the banking on the operation business. So they use this tier 1 capital to observe the losses. So you can say this is one safeguard for the bank's operation, ठीक है. So tier 3 is important one. This is also tier 3 is something like subordinated debt to cover. This also includes subordinated debt to cover the market risk. Market risk कैसे क्यों होता है? This is due to the trading activity. So that's why there are some more market factors which creates the market risk. So these are things important one. And to avoid this insolvency and to maintain the financial health, to avoid we can say insolvency of bank and maintain the good financial health, RBI strengthen the Basel-III rule. सो इसमें पर्टिकुलरली इसी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया गया है. और इसमें क्या किया गया है, दैट इज द टायर 1 कैपिटल और जो रिस्क एसेट है इसको बहुत ज़्यादा आपका टायर 1 आपका जो है रिस्क वेटेड एसेट, इसको जो है रिक्वायरमेंट इसको बहुत ज़्यादा टाइटन किया गया है, ठीक है. सो जैसे कि आपको यहाँ पर एक है पॉइंट्स, let me mention you here, one second. So यहाँ पर एक important point mention है, as per the Basel-III तो हमारा इक्विटी, सो जितना भी हमारा इक्विटी कंपोनेंट ऑफ टायर 1, equity component of tier 1 must be 4.5% of risk weighted asset. So ये normally at least 4.5% of risk asset होना चाहिए. और उसके साथ भी और एक ऐड किया है कि जो टायर 1 कैपिटल रेशियो है, जो टायर 1, एक सेकंड यहाँ पर हम ये से कर सकते हैं. So this is tier 1 capital ratio has to be at least, ये जो है at least मिनिमम कितना होना चाहिए, at least 6% होना चाहिए, ठीक है, एटलीस्ट 6% होना चाहिए एज पर द Basel-III. सो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है सो दैट वी कैन अवॉइड द इंसॉल्वेंसी ऑफ द बैंक एंड ऑल्सो मेंटेन ए गुड फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द ऑल द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. सो होपफुली ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपके लिए यूजफुल हुआ होगा, आपको कुछ जो कॉन्सेप्ट से थोड़ा क्लियर हुआ होगा. एंड इसका जो यूज है हम नेक्स्ट जो कुछ सेशन में आपको इसका यूज देखने के लिए मिलेगा, जिसमें हम आपका जो केस स्टडी सॉल्व करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू द ऑल द RWA रिस्क वेटेड एक्सपोजर्स एंड आल्सो Basel-III रिलेटेड क्वेश्चंस. उसमें आपको ये वाला जो सेशंस है आपको जो टर्म है यूजफुल होगा, वहाँ पर आपको डायरेक्टली जब हम टर्म के यूज करेंगे आपके लिए और भी हेल्पफुल होगा. और भी बहुत कुछ टर्म्स है जो आपके लिए एग्जाम के लिए भी यूजफुल है, वो हम साथ ही कुछ नेक्स्ट सेशन में ऐड ऑन करते रहेंगे जब उसका रिक्वायरमेंट रहेगा हमारा केस स्टडी के साथ. सो चलिए फिर मिलते हैं और एक न्यू अपकमिंग सेशन में. थैंक्स फॉर वाचिंग एंड वी expect that all these sessions it's adding some value to your preparation, and if you like it then like, share, subscribe to our channel so that we will have a great community in the upcoming time and as soon as possible as well. So if you have not joined the Telegram channel, join this channel so that we can discuss your queries, doubts in that ग्रुप आज. ठीक है, लिंक विल बी इन द अबाउट सेक्शन. फिर मिलते हैं एक न्यू अपकमिंग सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड जस्ट कीप लर्निंग. टाटा.